Check, check, check. Good morning, everyone. This is Yuva Kabaddi Series Monsoon edition, and this is match number 21. After a day's break, we are back on Fan Code here, wherein the first match for today would be Sindh will be taking on our Arrows. That's a good match to look out for because Aravalli Arrows they are going strong. As we say, the first match is the Sindh Sonics versus Aravalli Arrows. And the next four matches for the today is Hampi Heroes will be taking on Pediac Panthers at 11:30. And in the afternoon session, we have Kaziranga Rhinos against Maratha Marvels, Panchala Pride against Vijayanagara Veers at 4, and Taroba Tigers will be taking on Murtal Magnet at 6 p.m. So do not miss the Josh Jazba Junoon of this young super Kabaddi talent on the Yuva Kabaddi series match here today at Hadvansh Thana Bhagat Indoor Stadium.
Now, you look at the points table here. We have 10 teams, but remember, this is the survival round. Only 8 teams will go into the next round. So today we witness Aravalli Arrows, which is on the 4th spot, playing against the 10th spot Sindh Sonics, who are looking for their first win. Staying strong on the table is Kaziranga Rhinos. Second is the Osperia Panthers, winning 3, except for Kaziranga Rhinos. All the teams have lost or haven't seen victory at all. Teams like Sindh Sonics and Tadoba Tigers. But then Panchala Pride on the 8th, Maratha Marvels on the 7th. So a lot of action taking on today. So do not miss the action at Yuva Kabaddi series. And let's go back to Biswajit Patra on the ground to introduce the teams. थैंक यू राधिका। वक्त हो चुका है दोनों ही टीमों का स्वैग से स्वागत करने का और अब उस टीम को बुलाने का जिनके पास है रफ्तार। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम सिंध सोनिक्स। और अब मैदान में जोश को हाई करने के लिए लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम अरावली एरोज। युवा कबड्डी सीरीज मॉनसून एडिशन का ये 5वां दिन और आज हमारे बीच हैं श्री चंद्रशेखर दुबे जी, जो कि फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। सर, युवा कबड्डी सीरीज वेलकम्स यू। Now, this is the match, Sindh Sonics would love to win and getting into the winning race. Sindh Sonics start 7, except for, Sanskar Mishra, even Balraj and Saurabh Kumar need to step up and support him in the raiding. But the only, defense that falls in too much is this core defense. They need to show up today. Otherwise, it would be Patra, Angad, Harendra Kumar and Vishal Patyal will be in the defense team looking after the covers and the corners. But except for Sanskar, as we say, Balraj Singh is showing glimpses of brilliance now and then, but Saurabh Kumar step up. So this is the starting 7 for Sindh Sonics. Now they are looking for their first victory, except for 2 teams, and this is the one team that didn't get a point on the scoreboard. And now let me welcome my partner commentator Navneet to introduce Aravalli Arrows for us. गुड मॉर्निंग राधिका। और हमारे सामने है अरावली एरोज, जो कि 4थे स्थान पर है और ये टीम है लेफ्ट राइट कॉर्नर में है अंकित जाट 4 नंबर की जर्सी, वही अर्जुन चौधरी 5 नंबर की जर्सी पहन के ऑलराउंडर की भूमिका में नजर आएंगे। मनीष शर्मा 55 नंबर की जर्सी डिफेंडिंग की भूमिका, वहीं ऑलराउंडर है तौसीफ अहमद। राशिद अली रहेंगे डिफेंडर, साहिल झंडू भी है और लोकेश घोषलिया जो कि डिफेंडर की भूमिका लेफ्ट कॉर्नर पे रहेंगे 6 नंबर की जर्सी पहन के। इसके अलावा है विशाल चौधरी, अनुज यादव, चेतन कुमार, राजा रणवीर कुमार और विक्की कुमार, ये बेंच में रहेंगे और जब भी जरूरत पड़ेगी वो टीम में मैदान में आएंगे। I mean, looking at the team, strength, I don't even will look at. And this is Aravalli Arrows winning the toss, and we have our eminent guest here, Mr. Arjun Shekhar Dubey, from Parliament Government of Jharkhand, to encourage this young talent here. We appreciate your presence here on the match, sir. And yes, Aravalli Arrows have won the toss, and they will go for the other side of the court.
things like this turn lucky because they have played four, just lost one. So they might look for the place where they have started winning. So they want to go for the right side of the court, Navneet. And बिल्कुल this is the player we will be eyeing on. Vishal Patyal Singh. He played about 4 matches, only 8. Rate strike rate is 42.1 for Sindh Sonics. As we say, these players need to step in, Navneet, for Sindh Sonics to get that first victory. A team combination, especially the defense and the 3 raiders, need to come up as a unit to execute their skills there. जी हाँ, और विशाल जो कि 10 नंबर की जर्सी है, आज उनसे उनकी टीम को उम्मीदें रहेंगी ताकि, और इसी बीच राशिद अली के पास है 13 टैकल पॉइंट्स और ये बेहद खास। राशिद वहीं दूसरी तरफ विशाल को शायद रोकने की आज कोशिश करेंगे, और दोनों टीमें जो बेहद खूबसूरत जर्सी में नज़र आ रही है, यहाँ पर मिट्टी को प्रणाम करते हैं। मिट्टी तो नहीं है, यहाँ पर मैट पर है, और खिलाड़ी आपस में चर्चाएं करते हुए। इसी बीच अरावली एरोज, राधिका देखिए 4 मैचेस खेले हैं उन्होंने और 3 मैच जीती है, 4थे स्थान पर है वो। Yeah, they have lost only 1 match there, so they want to get back to winning ways. And last match they have won comfortably, so they would come with a positive edge. And Sindh Sonics, this is a team, that haven't got a point on the leaderboard. We have, I remember, there are 2 teams, Tadoba Tigers and Sindh Sonics, who haven't won the match. But then Tadoba Tigers have lost few matches less than 7 points. But this is one team that did not even, lose with 7 or less points. Now, let's start the countdown and that we'll get going. Match number 21, we are looking at Sindh Sonics, Aravalli Arrows have won the toss. So Sindh Sonics, the Raider, in blue jersey, will be taking on. And this is Sanskar Mishra, the only hope in the squad who is consistently gaining points, about 35 rate points in 4 matches, and average is about 8 rate points. That's a good one for him. Running bonus, but then the ankle is being taken care by the in player. Out. 1 point Aravalli Arrows. बिल्कुल, आप संस्कार मिश्रा की बात कर रहे थे। संस्कार नवीन मिश्रा उनका पूरा नाम। 35 पॉइंट इस टूर्नामेंट में लेके आए। यहाँ पर किस तरीके से एक और पॉइंट लेकर के जाना चाह रहे थे, पर डिफेंस एक साथ आया, उनके एंकल होल्ड करते वो गिरते हैं मैदान पर, और यहाँ पे शुरुआत हो जाती है ऑपोजिशन की डिफेंस की टीम की पॉइंट्स में। और देखिए फिर से एक बार वही दृश्य हमें देखने को मिलेगा, पर तौसीफ ने 2 पॉइंट लिया है, 1 बोनस के और 1 टच पॉइंट। I mean, how clearly he attempts for the bonus, but the ankle hold on the ankle wasn't that great. So 1 minute point for Aravalli Arrows, and they look strong here. Now we say, Balraj shows a bit of glimpse, hope for the team in Sonics, but consistency should be the key for this. Playing near the box line doesn't help. You need to get deep in, because if you go back, the team would go under pressure of do or die raid in the next 2 raids. जी हाँ, इसी बीच साहिल झंडू, और इससे पहले जो बलराज आए थे, बलराज को मैंने अक्सर देखा है काफी वो एम्प्टी रेड लगाते हैं, और साहिल झंडू अपने टीम के लिए रेडिंग करते हुए बॉक लाइन पर वो खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं वक्त का, और वक्त जैसे सुई की तरह, रेत की तरह उनसे फिसल रहा है और समय समाप्त होता है। वो चले गए अपने कोर्ट पर। साहिल देखिए फिर से एक बार बलराज, क्या हमें फिर से वही चीज़ देखने को मिलेगा, एक एम्प्टी रेड जिसके लिए बलराज जाने जाते हैं। 20 नंबर की जर्सी, वो वहां पे किक लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर प्रेशर होगा, और इस प्रेशर पे वो खरे उतरे हैं
बहुत ज्यादा एडवांस टैकल था राधिका, आप उसे एक्सप्लेन करना चाहेंगी क्या कि किस तरीके का डिफेंस में वहां पर एरर हुआ है? Absolutely. What the right cover thought was, left corner has initiated the ankle hold that missed, so let me go for the support. But the left corner did not initiate, but then he had to give away those 2 points. Yeah, at least a good start for Sindh Sonics. So let's hope this momentum goes for them. Talking about Balraj going for more empty rates, but let's see if he continues to get those points. And look, beautiful running hand touch from Jersey number 10. Sophie. Out 1 point. Ahmed. Aravalli Arrows. जी हाँ, तौसीफ देखिए उनमें बहुत ही तेजी है और जैसे छू करके निकले हैं वो बिल्कुल एरो की तरह निकले हैं, तीर जैसे बहुत ही स्पीड में निकलता है। बलराज फिर से एक बार हमारे साथ ऑपोजिशन कोर्ट पर है, क्या वो बोनस लेने का प्रयास कर रहे हैं? और देखिए किस तरीके से किक मार रहे हैं, लगातार छूने की भी कोशिश कर रहे हैं, पर बलराज एक और एम्प्टी रेट। जी हाँ, Absolutely. Now looking at Aravalli's arrows experience, they have committed an error going for those advanced tackle, but I don't think they'll repeat it. Sahil Chandu, for us, he's back with an empty raid in his first raid, but then this was on the line attempt, buddy, for the bonus. So you need to get deep in, cross that black line completely to get that bonus point when you have 6 or more defenders on the court, and this was a good one. और साहिल जिनका अर्थ होता है साथी, जिनका अर्थ होता है मित्र, और वो आज बिल्कुल सिंध सोनिक के साथ तो मित्रता नहीं दिखाना चाहेंगे। और यहाँ पर अरावली एरोस को एक और पॉइंट मिला है राधिका। 4 मिनट का खेल हो चुका है। Now yes, there are substitutions happening at Aravalli Arrows. Why not? Because they are going strong on the team, and this is the coaching staff for Aravalli Arrows. Sorry, it's Arvind Oja sir for Sindh Sonics. He might be a little disappointed with the performance of the team. Sanskar Mishra, luckily this time he goes away with the bonus point. He's been revived and he gets a point for the team. और साहिल की बात मैं कर रहा था राधिका कि साहिल का अर्थ होता है मित्रता, तो कोर्ट पे तो निश्चित रूप से मित्रता नहीं होती है, पर जब आप खेल करके मैदान के बाहर जाते हैं तो क्या ऑपोजिशन के खिलाड़ियों से आपकी मित्रता रहती थी? Absolutely, why not? Not just from the opposition team, but the interstates, or you go to the countries, you make friends. That's the cultural exchange that happens when you play across the nation. So, but there would be a lot of friends across them, except for on the court, they need to do justice for the team. बेहद खूबसूरती से वो बात राधिका ने हमें बताई कि भले मैदान पर एक कड़ा संघर्ष होता है, पर जब ये खेल खत्म हो जाता है तो दुनिया में काफ़ी मित्रता की आवश्यकता है, और वो मित्रता खिलाड़ियों के बीच लगातार बनी रहती है। इसी बीच विशाल चौधरी रेडिंग की भूमिका में नजर आते हुए और शानदार नियॉन कलर के जूते पहने हुए एक पॉइंट की बात वो कर रहे हैं। देखना है रेफरी का क्या इशारा रहता है, और रेफरी ने एक पॉइंट भी दिया है, एक बोनस पॉइंट भी दिया है राधिका। Absolutely, bonus plus a point. And look at this, the extension, the angle between the legs, playing for 2 points, 2 touch points and a bonus, but then he gets 2 points in total. This is Balraj. He was lucky enough with 2 points on board for the team, but then the only wonder I have is he does not get for the back line. That is what is expected from the support raiders. Sanskar Mishra, I understand he's doing quite well for the team, depending, the team is not supporting him, especially the defense is faltering all the time. For a raider to perform, consistency is tough enough. Now, this is talk about consistent. This man is consistently performing in this match for Aravalli. बिल्कुल तौसीफ अहमद रीडिंग की भूमिका में नजर आ रहे हैं हमें, और देखिए आसानी से वापस अपने कोर्ट पर जाते हैं। बलराज फिर से एक बार आएंगे। राधिका आप बताइए क्या हमें देखने को मिलेगा? क्या बलराज का शिकार होगा, या वो पॉइंट्स लेकर के आएंगे, या हमेशा की तरह एम्प्टी रेड जिसके लिए वो जाने जाते हैं? Now what I'll say is, Aravalli Arrows would not tend to do mistakes. Once they have done it once, they would not love to repeat that. So they will be cautious in defense.
but it's up to the Raider to go ahead and look at the ankle hold from the right Ladder corner. out. Woo, 1 point. that was a Aravalli. spot on. Perfection. Perfection is what we're looking at, Lokesh. And one slow footwork, he's been taken care of. बिल्कुल, और बलराज वहां पर उन्हें शानदार एंकल होल्ड किया गया था, वो गिर गए, उसके बाद मूव नहीं कर पाए। और जब लगातार एक खिलाड़ी एम्प्टी रेट्स मारता है तो उस पर प्रेशर भी रहता है कि अगली बार पॉइंट लाना है, और उसी प्रेशर के दबाव में बलराज वहां पर बिखर गए, और यही खेल है। Exactly, once you go for the empty raid, of course, not for the team also, but also for yourself, I need to get those points for the team. So they tend to do mistakes, but now you're gaining experience. You need to put up your best shoe to perform. And Vishal Patyal, this is a good point to get that bonus point right under the nose of the left corner, who is brilliant. And this is a do or die raid for Saucy. जी हाँ, यहाँ पर देखना पड़ेगा क्या विशाल मिडलाइन पर अपना हाथ रख दिए थे। यहाँ रेडर आउट होंगे डू और डाई रेड में तौसीफ, और तौसीफ उनके एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, लगातार रेड डाल रहे हैं, तो मुझे लगा कि शायद वो डू और डाई रेड में नहीं आएंगे, वो अपने को बचा करके रखना चाहेंगे, पर वो हर एक प्रकार का चैलेंज को अपॉर्चुनिटीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भले वो आउट हो गए, पर उनकी तारीफ करनी होगी जिस तरीके से वो लगातार एक के बाद एक रेड कर रहे हैं। यहाँ पर संस्कार मिश्रा वो आउट हो गए हैं। Yes, Sanskar Mishra, he's been taken care of. He slips. Just the touch of the defender, he slips. And this is Vishal Chaudhary. For us, 1 versus 4 doesn't need to go deep in, and barefoot he uses it to go for that kick. But then, when you have 1 versus 4, kicks would be difficult, but because you have end line defense there. Now, it will be wise for Aravalli Arrows to come back safely. बिल्कुल, और इस हाफ में, प्रथम हाफ में 50% का खेल हो गया है राधिका, 10 मिनट का खेल गुजर चुका है, और दोनों जो टीमें हैं काफी सेफली खेल रही है। जी हाँ, Gurpreet Singh, coach, the team is doing quite good, but still he has that serious look on that. It is good enough because he is observing how his team is performing and whom to substitute, whom not to substitute. Yes, and we're talking about, we have our eminent guest here. This is Mr. Arjun Shekhar Dubey, who was the former Parliament government of Jharkhand, for encouraging the players here. So that a good gesture, Navneet. बिल्कुल, और जिस तरीके से ये जो बड़ी बड़ी हस्ती जब हमारे बीच आती है तो इससे खेल बढ़ता है, खेल की जो खिलाड़ी है उनका जो पॉजिटिविटी आती है उनमें, और इनकरेजमेंट हम सभी को चाहिए कहीं ना कहीं। इसी बीच अंगद कुमार ठाकुर, और देखिए अंगद 5 नंबर की जर्सी पहने कोर्ट के दोनों तरफ जा रहे हैं, और यहाँ पर घेरने की कोशिश हुई थी राइट साइड से, पर इतने प्रयास के बाद, इतने सेकंड्स के बाद यहाँ पर अंगद वापस चले गए हैं। Yes, a small warning for the entire team because they've been kind of prompting when the raider was in the court. So, it kind of distracts the raider from doing what he is best at. So such kind of things, it should not be done. It should be a fairer play. So that's a green card for the team, a small warning for the captain so that he controls the team, maintains the decorum of the Now this is Vishal Chaudhary, 1 versus 4. I mean, since though they have started late, Navdeep, they are still in the match, and with this tackle pretty much in the match, and they haven't let those away. Yes, we're talking about Vishal Chaudhary sir, who is the a former member of parliament for the government of Jharkhand, who is here, and I'm sure he might have played kabaddi in his young age. What do you say, Navneet? बिल्कुल, कबड्डी का ऐसा खेल है कि हम सभी अपने बचपन में निश्चित रूप से इस खेल को खेले हैं, और यहाँ पे देखिए प्रिंस कुमार रॉय
रीडिंग की भूमिका में 4 नंबर की जर्सी पहन के 8 मिनट का खेल शेष है और देखिए किस तरीके से वो जा रहे हैं। 1 पॉइंट उन्हें शायद मिलेगा क्या? Nothing at all. He goes empty-handed there. But then look at none of them, Aravalli arrows, they are going strong mentally and also on the table. But then, they are taking it slow. They are not, showing off all their weapons to them. They are just playing what is required against which team, so that they are not exposing all their strength there. That's what I feel. Do or die raid. बिल्कुल डू और डाई रेड रहेगा यहाँ पर बलराज। एक बार फिर से इस बार उन्हें मुस्तैदी दिखानी पड़ेगी और यहाँ पे मुस्तैदी दिखाने की कोशिश तो है, पर क्या वो मिड लाइन को टच करते हैं? रेफरी के इशारे का इंतजार रहेगा राधिका। 55. It should be a super raid. 3 points. Sindh Both are Sonics. 3 points. Look at this, the do or die raid Sindh Sonics have done, and I'm sure this will. Balraj is being kind of lucky though. Look at that. Number of defenders touched as one of the defenders anti-crosses. So many points has been awarded for the first time ever. Sindh Sonics goes into the lead. 1 point. Aravalli arrows. Close level. बिल्कुल बिल्कुल माहौल बदल दिया बलराज ने अपने रेड से। इसी बीच तौसीफ फिर से एक बार यहाँ पर पॉइंट्स लेकर के आए हैं। बलराज को निश्चित रूप से उस सुपर रेड से कॉन्फिडेंस मिलेगा और 14 मिनट के खेल होने के बाद ये दोनों टीम में कुछ भी फर्क नहीं है। दोनों टीम के पास 12-12 अंक है और वहीं एक तरफ सिंध सोनिक जो आखिरी पायदान पर है, 10वें स्थान पर है। अरावली एरोज ने 3 मैच जीते हैं अपने 4 मैच से, वो भी 12 पर है। तो ये देखने को मिलता है कि कभी कभी भले आप मैच हार जाते हैं, आप में वो जोश, जज्बा और जुनून रहता है वापस आने का और लगातार अच्छा खेल दिखाने की प्रयत्न करने का, कोशिश करने का। Definitely, one should have that fighting spirit. Whether you lose or win the match, every time you get on the mat, try and show the best performance you are doing. So that's how it is. There would be a lot of upsets going forward. We'll see. The table topper might have to lose a match or two from the bottom of the table. Like this would happen definitely, because one super raid like that would change the dimensions of the game. मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगा राधिका, क्योंकि आप इस खेल के साथ लगातार जुड़ी रही हैं। थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे कि रेफरी ने ग्रीन कार्ड दिखाया था क्योंकि एक खिलाड़ी शाउट कर रहा था, पर अक्सर अन्य खेलों में देखा जाता है कि जब खिलाड़ी दूसरे पर प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं तो कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं ताकि ऑपोजिशन के मानसिकता पर असर हो। तो क्या कबड्डी में ये स्कोप रहता है क्या कि आप ऑपोजिशन को कुछ बोल दे, ऐसी बात जो उन्हें चुभ जाए, जिससे उनकी परफॉर्मेंस नीचे चली जाए? ऐसा क्या होता है? Absolutely होता है, because when if suppose I'll just take an example, if you're trying to attempt a bonus, now the defender says नहीं हुआ, नहीं करेगा, no, he won't do it. If you say that, the raider gets irritated and tend to go deep in to prove the defense wrong. Such kind of mind games do happen. That's the reason, you have those warnings coming up. लेकिन ये जो चीज़ें हैं वो तो मैच को एक्साइटिंग बनाती है। तो आपका ये जनरली क्या राय है जो ये ग्रीन कार्ड दिखाया जाता है, और ये वहाँ पे लाइन कौन सी है कि क्या शाउटिंग है या क्या मेंटल वर्बल गेम है? ये अंतर कैसे कर पाते हैं? Now, member in the team can control the team. That's the captain. Or name one, they can control the team. But everybody, take snap, come back, aa gaya, piche aaya. No, all that is definitely because they are playing so close to each other. The raider and the defenders are so close to each other. So that would definitely divert the raider from performing his best. So such kind of green cards I would appreciate, so that there would be a fairer play for both the teams. बिल्कुल। और ये सब जो ग्रीन कार्ड भी है, जो ये छोटे छोटे माइंड गेम्स होते हैं, वो खेल को बेहतर बनाते हैं। और ज़िंदगी में भी तो माइंड गेम्स अक्सर होते रहता है, पॉलिटिक्स होती है जीवन में भी, तो खेल में भी वो खेल भी जीवन का एक हिस्सा है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हमें
जिंदगी में भी सीखने को मिलती है खेलों के द्वारा। अर्जुन चौधरी कैप्टन यहाँ पर एम्प्टी रेट के साथ वो वापस जा रहे हैं, तो प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर में रहे थे 10 नंबर के खिलाड़ी विशाल पटियाल सिंह, और इस मैच में वो लगातार अपनी कोशिश कर रहे हैं कि अपने टीम को पॉइंट्स दे, और यहाँ पर एक पॉइंट्स विशाल निश्चित रूप से अपने टीम के लिए लेकर के आए हैं। सोनिक जर्सी नंबर 8 out. Yes, that's the third point on board for him, and luckily he's not being tackled by the defense of Aravalli Arrows. This was no grip. If you're going for the thigh hold, take your right arm into the thigh, only then it would be successful, and then you turn the Raiders' leg. That's how the thigh hold should be done, and this is when he's playing for the bonus, but I'm sure he gets that touch point Jersey there. number 12 out. Now slowly, Tausif is one raider who's been consistent, and he's being quite good for the team. This is a 6th straight point for him. He's been tackled only once, so the momentum is good. But Sanskar Mishra will talk about Navneet. Lot of hopes on him, but today it was only 2 points for him. Or sorry, a point for him. In fact, he's been tackled twice. जी हाँ, संस्कार को यहाँ पर क्या एक पॉइंट मिला है राधिका, और इस बीच क्योंकि 1 मिनट 36 सेकंड का खेल बाकी है, और इस टूर्नामेंट में टॉप रेडर्स की बात करना चाहूँगा। विशाल चहल जो 77 पॉइंट्स लेकर के इस टूर्नामेंट में फिलहाल टॉप रेडर की पोजीशन पे, टॉप डिफेंडर है बिट्टू बनवाला 21 पॉइंट पे। वहीं अगर सुपर टेंस की बात करें तो अर्जुन अनिल राठी ये 4 बार कारनामा कर चुके हैं। अर्जुन चौधरी इसी बीच पकड़े गए हैं। Points in the Sonics. Now Navneet, though we talk about Sindh Sonics not playing quite good as Aravalli Arrows, but then look at the difference. They are not slipping those points go away. Especially Balraj getting lucky with that super tackle where the defender anti-crossed, a super raid that anti-crossed, and also Vishal Patyal. This is the first time he's been tackled. जी हाँ, और राधिका, आप जिस तरीके की अच्छे खेल की बात आप कर रहे हैं, भले सिंध सोनिक 10वें नंबर पर है, मान लीजिए आप यहाँ पर सिंध सोनिक की कोच होती, 4 में से 4 मैच सिंध सोनिक हारा हुआ होता, और इस मैच में आता है जिस पर प्रेशर रहता है, तो आप एज अ कोच क्या बताएंगे अपने टीम मेंबर्स को? Now, what worse can happen than what they are in the position, right? उससे बुरा तो कुछ नहीं होगा, right? What they have lost, so it could be another loss, but then if you lose also, fight it and lose. That's what it should be. I'm sure the players are doing a lot of hard work, not on just the match, but in the practice sessions as well. There would be a positive. Only give a positive talk to these players. And remember, these are only young players around 21, 23 years of age. So they need that push. They are learning it the hard way, but they will learn it through. बिल्कुल, इसी बीच फर्स्ट हाफ का खेल यहाँ पर समाप्त हुआ है। सिंध सोनिक 15 और अरावली एरोज 18। जो खिलाड़ी है यहाँ पर छोटे से ब्रेक का आनंद ले रहे हैं, वो रिफ्रेश करेंगे अपने आप को। और जो हम देख रहे हैं मैच समरी, मैच नंबर 21 में सिंध सोनिक वर्सेस अरावली एरोज, यहाँ पर 15 पॉइंट है सिंध सोनिक्स के, अरावली एरोज के 18। रेड पॉइंट्स की बात करेंगे, 11 और 13 अरावलीज लीड कर रही है, वहाँ पर टैकल पॉइंट्स में भी 2 पॉइंट से लीड कर रही है, तो 5, और वहीं टैकल पॉइंट से 3। एक्स्ट्राज में सिंध सोनिक के पास है 1, इसीलिए डिफरेंस मात्र 3 का। और ये मैच अगले हाफ में भी रोमांचक पोजीशन पे रहेगा। देखना है अगले हाफ में क्या होता है राधिका। Absolutely nothing to take away from Sindh Sonics here. We'll slip into a small break, but we'll be right back.
Yes, we are back on fan court here. Looking at the highlights of the first half of Sindh versus Aravalli Arrows. You know, since the Arrows have started off well, but then Sindh Sonics have a tagging reply for them. Balraj Raider today did 10 raids, but then got 7 raid points, 1 super raid as well. That was in the do-or-die raid situation where the defender anti-crossed, and he's been so lucky today to get those multiple points. And this is the first time he's been tackled by the left corner there, but then he is being performing well. Look at the defense in tandem for Aravalli Arrows. You know, nothing to take away from the Raiders of the teams, but then Aravalli Arrows Raiders 3 tackle points for the left corner here. We talk about Lokesh. He's been quite good when Balraj has stepped in. Now next 20 minutes, will Sindh Sonics play a better game and win their first match of the Monsoon edition and get into a positive mindset? Now it would be Aravalli Arrows who will be going to the first raid because they have won the toss, chosen the match in the first half. बिल्कुल, और दूसरे हाफ में सभी दर्शकों का स्वागत है। विशाल चौधरी, और देखिए उनके फुटवर्क बेहद खास है, और 1 पॉइंट लेकर के वो दौड़ करके लॉबी में गए और शायद वहां पर बलराज का शिकार बना है, ये देखना होगा। नहीं, बलराज का नहीं, बलराज तो आएंगे अभी रेडिंग करने के लिए। जर्सी नंबर 2 की बात हो रही है। Yeah, the right corner is being taken care of in the first raid of the second half. This is Balraj Singh. I mean, he has done quite good for the team today with 7 raid points, but he's been tackled twice, but then he has done a super raid as well in the do-or-die raid. So, you know, today Sanskar Mishra is not doing that good, but look at this one, it will be 2 points. So he is marching ahead and he would get close to Super 10. He's on 9 raid points. Good going Balraj, and the score difference also reduces here. Good start for Sindh Sonics in the second half. जी हाँ, वहां पर अगर देखेंगे डिफेंस इतने लेट से आता है, ऑलमोस्ट मिड लाइन पे पहुंच चुके थे, बॉक लाइन और मिड लाइन के बीच में, और बलराज जो वापस जा रहे थे उनके पास फोर्स था, मोमेंटम था, और उसको रोकना अचानक से ऑलमोस्ट नामुमकिन सा है। और ये बात होती है कि अगर कोई भी खिलाड़ी को रोकना है, अगर वो मोशन में है, तो उससे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, और आप वो स्टैटिक फोर्स नहीं लगा सकते। यहाँ पर थोड़ा सा खिलाड़ियों को इन छोटी छोटी बातों को अगर साइंस के नज़रिए से भी समझाया जाए, फिजिक्स के नज़रिए से, तो ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है खिलाड़ियों के लिए। Absolutely. Yeah, now this is Balraj going high on confidence. He goes for the consecutive raids. He has it for bonus. Will he get it? No, he did not. This is Aravalli Arrow, Vishal Chaudhary. 1 versus 4. You know, this is what I say. When you have 4 members in the defense, do not go for those toe touches, because it would be too late for you to get up. By then the far corner might come to dash you. No argument. That's what the rest of the team says. Out of you bounds. argue. 1 point. One of the defenders went off the court for Sindh Sonics. So point will be awarded. Points like this will not be counted for the Raiders, but those extra points are these points. Oh, that's again we see Balraj steps out of the end line. That's a blow. That's a blow for Sindh Sonics. जी हाँ, बलराज जो लगातार अपने टीम के लिए पॉइंट ला रहे थे, और एक और खेल का एक पहलू है सेलिब्रेशन। तो कबड्डी के मैट पर मैंने ये बहुत कम देखा है कि खिलाड़ी जैसे ही पॉइंट लाते हैं वो सेलिब्रेट करते हैं। जैसे बाकी खेल में अगर आप देखेंगे कि जैसे गोल होता है या विकेट ली जाती है तो सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर विशाल चौधरी पकड़े गए हैं और यहाँ पर 3 टैकल पॉइंट्स मिलेंगे। क्या कमाल का खेल यहाँ पर, माफ कीजिएगा, सुपर रेड में, जी हाँ, सुपर रेड में 3 पॉइंट मिलता है। Yeah, that's a super tackle opportunity and being quietly taken care by the defense. Gets 2 tackle points and 1 revival for Sindh Sonics there. Score difference, I'm pretty much impressed with Sindh Sonics how they're playing.
And the only problem I face now is, Jersey we number 10 have out. Balraj who's 1 been point. doing quite Sindh good. He Sonics. stepped out. The order in which you go out, the order is that you come in. So for Balraj, it will take some time to get onto the court now, Navneet. अच्छा, एक बार राधिका मैं पूछना चाहूंगा कि पिछले बार हमने क्या देखा? हमने देखा सुपर टैकल, 3 खिलाड़ी पकड़ लेते हैं, उसके कारण 2 पॉइंट मिलता है। तो क्या आपने कबड्डी कोर्ट पर कभी ऐसा दृश्य देखा है कि मात्र एक डिफेंडर है, एक रेडर है और वो डिफेंडर पकड़ लेता है? यहाँ पर अर्जुन, क्या शानदार खेल है, क्या फोर्स का उन्होंने यूज किया और डिफेंस वहां पर पकड़ नहीं पाए। जी हाँ राधिका, मैं वो सवाल आपसे फिर से पूछना चाह रहा हूं कि कभी आपने देखा है कि एक डिफेंडर वो एक रेडर को पकड़ लिया है? Absolutely. We have seen in the other professional leagues as well. That is possible. We have seen players going for solo tackles in the dying minutes of the match, being the solo defender. I have seen it twice myself. So that is possible, but that's once in a blue moon that happens. So it will mostly goes in favor of the raider, but then sometimes, if you are able to escape for the last few seconds, and that would happen only if you go for those dive tackles on the double ankles, or if you go for the shoulder holds of the raider. Now that we have witnessed, personally. Yeah, that's possible. 2 point. Aravalli arrows, chess number 2 and 10 out. बिल्कुल, क्योंकि अक्सर मैं देखता हूं कि जब भी एक खिलाड़ी रहता है वो खुद ही जा करके सरेंडर कर देता है। Sindh Sonics. 5 out, 4 in. और Now Sindh Sonics are down to 2 men. This is the worry. It's been 26 minutes nearly, and none of the teams have gone for those all out. So Sindh Sonics tried to hold on when they were on the verge of all out, and also same with Aravalli Arrows. Now being 2 members, and this is a revival point for Prince Kumar. Jersey number So 8 that's a out. good substitute, and that's a bonus plus point. So scores level, Navneet. What a match we are witnessing now. You can't take anybody easy here. You don't have the angle. You can't go for the shoulder 11 hold. out. There, you can go for body tackle there. This is a good show by Sindh Sonics. बिल्कुल 26 मिनट के खेल के बाद अगर दोनों टीमें बराबर रहे 24-24 पॉइंट्स पर, तो आप बाकी के जो आखिरी 13-14 मिनट है कहीं अपने कुर्सी से नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये मैच अंतिम क्षणों में जाएगा और ऊँट किस करवट बैठेगी ये तभी पता चलेगा। और यहाँ पर विशाल चौधरी पकड़े गए सिंध सोनी के। एक बार जो राधिका आप बात कर रही थी कि मात्र 2 खिलाड़ी बचे हैं, फिर से एक बार सुपर टैकल देखने को मिला है, 2 पॉइंट मिलेगा और वो 2 खिलाड़ी से 4 खिलाड़ी पर हो गए हैं। Absolutely, because we just had a Prince getting a point, so they got a revival. So there were up to 3 defenders there, and they have taken a super tackle. And this is the second time Sindh Sonics goes into the lead, and that tackle got Balraj onto the mat. So this is one good move for Sonics, and the perfect time for Sindh 2 Sonics point. to get that first Sindh win. Sonic. Now Sindh Sonics, Jersey number I 10 think and 4. Balraj has also completed his super done made when it's required the most. Official time out. बिल्कुल। और एक चीज मैं देखूंगा कि अक्सर जब बलराज का जो मैं चेहरा देखता हूं वो काफी सीरियस रहते हैं, पर वो जब 2 पॉइंट लाए उनके चेहरे पे मुस्कान आई और वो बेहद खुश नजर आ रहे थे, और ये जो खुशी है वो चेहरे पर चार चांद लगा देती है राधिका। Aravalli arrows. Now Challenge there's a is video 1 reference. point. Our decision 2 point. Please review. Now Aravalli Arrows have taken a reference, as we see, we have successful reference in each half. Now referee has given 2 touch points for Balraj. That was his decision, but that's been challenged by Aravalli Arrows, stating only 1 touch point. Number 10 Tausif was definitely there. This was, did he touch any raider before that? That's the question. हाँ, ये कुछ सेकंड में पता चल जाएगा हमें। और इंतजार है रेफरी के निर्णय का। Now these are the 2 players in question.
Will of them warm the bench or one of them will turn back. Depends upon how review will go. Balraj is going in good momentum today. His coaches are also kind of nervous and waiting for the death meet. जी हाँ, जैसे एक जो बच्चा रहता है वो जब अपने रिजल्ट का इंतज़ार करता है, रिपोर्ट कार्ड मिलने वाला रहता है, तो वो जो टेंस माहौल रहता है उसी तरीके का कुछ माहौल है। आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। Review successful, only 1 point. Jersey Yeah, number 10 review out. successful, only 1 point. Captain, That's a good no review review. for Aravalli Arrows. So only 1 point for Balraj there. I mean, after the revival of Balraj, that's a good point for Balraj there. I mean, he kept his momentum going on, which is a good thing for Sindh Sonic. What they need is just keep up what you're doing right now. Just don't go for those advanced tackles, give away multiple points, and get that score difference wider. Get into the winning ways, you will get there, and a beautiful tackle. Right corner fails to success that defense, but then support came in so well. The Sindh Sonics are marching ahead. बिल्कुल, सपोर्ट इस खेल में बेहद इम्पोर्टेंट। और प्रिंस अच्छा खेल दिखा रहे हैं आज। यहाँ पर 3 खिलाड़ी हैं और अरावली एरोज के पास मौका है 2 पॉइंट लेने का सुपर टैकल के थ्रू, जिससे वो इस गेम में वापस आ सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर प्रिंस एक और पॉइंट लेते हैं तो अरावली एरोज के पास सिर्फ दो खिलाड़ी बचेंगे। लेकिन प्रिंस वापस ऐसे ही चले गए एम्प्टी रेड के साथ। I mean, that's a good strategy, Navneet, because 3 members in the opposite court, it's not easy for the raider. And if if you get tackled, that would be a super tackle, 2 points for the arrows. So that's a good decision by the raider, young one who's been substituted. He comes into the play only as a substitute, but then he does it well. He's been supporting Balraj. Now the coaches are giving key, reviews to the teams. In fact, here. Now, they are going strong on the leaderboard, but then the coach might be irritated. Why are you doing this against the bottom team? This is what, the touch points is what Vishal Chaudhary, total 12 raids attempted, 7 raid points he gets here. Vishal Chaudhary for Aravalli. These are the touch points we've been talking about. He's tall enough. He goes with his reach to attack those. So this is what we expect from the Raiders. Spread your wings and go for the reach. बिल्कुल। और फिर से एक बार अरावली एरोज की तरफ से अनुज यादव को मौका मिला है। अनुज किक लगा रहे हैं, बोनस पॉइंट की कोशिश कर रहे हैं। अभी लगातार वो बाएं तरफ से लगातार रेड कर रहे हैं, अपने एरिया से दाहिनी तरफ उतनी नहीं जा रहे हैं। और अनुज इस रेड को कंप्लीट करेंगे। बोनस पॉइंट वहां पर मिला है अनुज को। राधिका और बलराज फिर से एक बार हमारे स्क्रीन पर आज के वो स्टार खिलाड़ी रहे हैं। उन्हें 9 टच पॉइंट्स मिले हैं, 1 बोनस पॉइंट मिला है, 2 बार वो अनसक्सेसफुल रहे हैं। और 10 पॉइंट के साथ इस मैच में सिंध सोनिक्स को लगातार अच्छे पोजीशन पे जीत की तरफ ले जाने के लिए वो लगातार प्रयासरत है। और मिड लाइन को उन्होंने टच किया, 2 पॉइंट मिलेगा। और इसी के साथ अरावली एरोज के मैदान पर, मैट पर मात्र 1 खिलाड़ी वो धकेल चुके हैं अरावली एरोज को ऑल आउट के कगार पर देखना है क्या आखिरी खिलाड़ी उन्हें बचा पाता है इस ऑल आउट के सिचुएशन से। अनुज यादव के कंधों पर यह दारोमदार रहेगा कि वो अपने टीम को इस पोजीशन से बचा पाए, क्योंकि वो यहां पे आउट होते तो 3 पॉइंट मिलता। वहीं पर 2 पॉइंट लेकर के आए हैं अनुज यादव, 1 टच पॉइंट, 1 बोनस पॉइंट। और ये जो छोटी सी बात है, भले देखने में 2 पॉइंट लग रहा है। जी हाँ राधिका। He got the revival for the team. Now this is again upon Balraj Singh, who has done his super 10. He needs to sweep this out, and he gets a point here. Sure, this is the 13th raid point for him. Now we talk about the previous raid of Balraj.
the support defender who's coming. He just holds the radar. If you would have changed the direction of the radar, it would have been a super tackle for you. No, just have that little common sense when you go for those surprise, go for those supports. So once you've done that, it would have been a different game here for Aravalli Arrows. But now, Sindh Sonics give away that bonus, but do not those advanced tackles and get that first all-out point for Sindh Sonics. A tackle Bonus point, point, 2 all-out Aravalli points, Arrows, first all-out all-out, point we 1 are plus 3 seeing in points. our match today. Sindh Sonics. And who is doing against whom? Sindh Sonics, who is sitting at the All bottom in. of the table, has got their first all against the Aravalli Arrows, who is on the 4th spot. So this is a good one for Sindh Substitution, Sonics. Aravalli Arrows. बिल्कुल। Three और पहली out, बार 4 in. ऑल आउट का दृश्य हमें देखने को मिला है। मात्र 8.5 मिनट का खेल। इस मैच में अभी भी सब कुछ दांव पर है। सिंध सोनिक्स जो 6 पॉइंट से लीड बना चुकी है, वो चाहेंगी कि आज वो एक ऐसी जीत लाए जिससे 6 के 6 पॉइंट्स मिले और इस पॉइंट्स की जो टेबल है उसमें वो अपना नाम दर्ज करा पाए। Absolutely, and we see our eminent guests here trying to understand the new rules of the game, because after coming on to the matter, we have got into the bonus and also the super rage, super tackles, and he is pretty much enjoying it. Love that smile on his face. He might be thinking about what he has done when he was a player though. This is Balraj Singh. If he wins for the team, nothing like it. He's got his super 10. Every box he has ticked today. Now there were a lot of escaping skills from this man on the screen. But he needs one victory for the team so that the team does not end up losing yet again. बिल्कुल। और इस वक्त हार के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए सिंध सोनिक्स को, और क्योंकि पहली 8 टीम जाएगी। ऐसा नहीं है कि इस हाफ में आपको टॉप करना है, बस थोड़े से पॉइंट्स रहेंगे। आपको इतना ही कमाना है कि जैसे होता है ना कि आपका घर चल जाए, तो घर चलाने के लिए बस आपको 8वें पोजीशन पे रहना है। सिंध सोनिक्स को इसी बीच प्रिंस कुमार रहा है यहाँ पर। क्या वो मिड लाइन को टच करने में सफल रहे हैं या उन्हें डैश कर दिया गया है? जी हाँ, डैश कर दिया गया है और वो सोच रहे हैं कि क्या रेफरल लिया जाए। The first look of me, looks like Prince dashed off, and after which he's got again onto the midline with the ants in. Okay. So they are challenging it. TV Empire. Sindh Sonic challenge. Each 1 point. Our decision. Raider out 1 point. Please review. Now, Sindh Sonics had asked for the video referral, saying, each 1 point. That means one of the defenders is also out of the court. Yeah, that's a good move. The raider is out, but the defender is also out. So that was a clear one for the referees to go for it. Now the guest is trying to understand now what happened. He is getting that input from the team who is explaining the game. I mean, the review would be successful 100%. Review successful. जी हाँ, Each 1 point. और Jersey number राधिका 25 जैसा out. आपने कहा रिव्यू सक्सेसफुल रहेगा, वही हुआ। 1 point Sindh Sonics. और देखिए so किस you तरीके go से for- I mean, the defender is way ahead of the radar of the lobbies. So that should be the right decision on the court itself, rather than, Sindh Sonic going for the run. Nothing to lose for them because they have won it. And Vishal Chaudhary, no, he did not cross the midline. Get it out. He did reach Point it, but he Sindh did not Sonics. cross it. Look at, how important those inches are in Kabaddi. बिल्कुल हर जगह ये जो इंचेस का खेल रहता है वो टच कर पाए, पर जो लाइन होता है उसे आपको पास करना पड़ता है अगर आपको वो 1 पॉइंट चाहिए। बिल्कुल जैसे कि परीक्षा में आपको पास होने के लिए 40 अंक चाहिए होते हैं, अगर आप 39 पे रह गए तो आप फेल ही माने जाएंगे, भले ही कितने करीब हो आप उस पास के।
Now, if you look at that example, Both when please. we talk about Please height come. being the advantage in kabaddi, yes, it does. During the Provided raid, the no raider coaching, was, please coach. Aravalli Arrows, 2 coach. more During the inches raid, height, he coaching, would have green reached that dot. midline, is it? So, when being tall in kabaddi will definitely help. So, this is one kind of those examples. And you talk about getting 40. I think for us it was like 36 points was the pass mark. But then I was not that Bonus bad. I point, was a good Aravalli student Arrows. in studies as well. So that was not me who was looking for pass marks. And here the guest, he's so impressive. He's trying to understand. He to understand what the new phase of kabaddi is like. हाँ, वो भी बता रहे हैं कि हम भी अपने ज़माने में खेला करते थे ये गेम। बलराज सिंह फिर से एक बार, आखिरी 5 मिनट का खेल बचा है और देखना है कि इन जो लम्हे बचे हुए हैं 5 मिनट में 300 सेकंड होते हैं और तकरीबन 10 रेड से कुछ ज़्यादा आ सकते हैं दोनों तरफ से। और तौसीफ अहमद पकड़े जाएंगे। तौसीफ Bonus point, Aravalli Arrows. 1 point, Raider out. Sindh Sonics. Yes, a bonus point is being taken by Tausif, after which the tackle from the right flank of the defense, the in position and also the corner position. This is the do or die raid. If Prince Kumar breaks this do or die raid and get the point, now he steps into the Jersey number lobby. 4. He steps into the lobby. Each 1 point, jersey number 4. Yep, Jersey this number is 4. what we say. He steps into the lobby without the touch, and one of the defenders them also out. steps in. That's right Jersey corner. number 4, Raider. Without the touch getting into the lobby. So in do or die raid, Raider also gets a point, but they might challenge it. Aravalli Arrows. Captain, please come. What is your challenge? Only Raider out. Okay, go back. बिल्कुल यहाँ पर चैलेंज आया है राधिका। Aravalli Arrows. Challenge is only 1 point. Our decision, each point. Please review. Yes, this is a do or die raid for Sindh Sonics. Prince comes in. He without even touching a defender, he kicks executed, but even touching it gets into the lobby. And without touching the raider, if the defense gets into the lobby, without the contact, the defender was also out. That was the original ground. So I think that will still stand good for me. Aravalli might lose their referral. जी हाँ, The मैच only में question for me अब was, Yeah. either whether the left corner went as the raider. But otherwise, it looks fairer for me. The right decision has come in from the referee in the first place. Yeah, Navneet, go ahead. जी हाँ, और ये सुबह का मैच बिल्कुल सेट कर चुका है माहौल को। Review. और Unsuccessful. आखिरी जो 4 से 5 मिनट बचे हैं ये तय करेंगे कि आज इस मैच में कौन जीतता है। Number 8. Number और 8. आज हमारे पास और 4 मैच है राधिका। Navneet, I'll tell you something. Since Ji. Sonics, Aravalli Arrows have taken the referral. Now, what happened is they asked, saying only the raider out, but then here 2 points have been awarded for the raider and only 1 point for the raider being self-out. So the referral went against Raider out. Aravalli Arrows here. Bonus, Aravalli Arrows. Raider out. 1 point. Sindh Sonics. जी हाँ, लेकिन वो खेल में पिछड़ रहे हैं, वो ये रिस्क लेंगे, ये भी बात है। बलराज फिर से एक बार 2 खिलाड़ी, क्या यहाँ पर ऑल आउट कर पाएंगे बलराज या उन्हें पकड़ करके टैकल पॉइंट्स ले पाएंगे? 2 टैकल पॉइंट्स मिलेगा अगर बलराज पकड़े गए, लेकिन बलराज शायद एम्प्टी रेट के साथ जाना पसंद करेंगे, जो इस मैच से पहले उनके साथ लगातार देखा गया था। लेकिन बलराज जी हाँ, पूरे तरीके से वो समय को खत्म कर रहे हैं, क्योंकि समय यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण दोनों टीमों के लिए। 1 technical point. Now, Favor this out. is Arjun Shekhar Sonics. Dubey, sir, the former member of parliament for government of Jharkhand. He is thoroughly enjoying this young lad playing on the match. Now, he might be betting on one of the teams. Like, he might be looking for either Sindh Sonics or Aravalli Arrows. Could be one of his favorite teams, but then he might be quite impressed by Balraj's performance today.
Now I say Balraj should not go empty-handed. Go for that touch point. And if you get this one more all out, then we will never look back in this match. बिल्कुल, अगर बलराज अंदर जाते हैं तो मनीष को सपोर्ट करना चाहिए था लेफ्ट कॉर्नर का, लेकिन बलराज उतनी अंदर गए नहीं। वो एम्प्टी रेड के साथ वापस आए हैं, पर इस बार वो फोर्स करेंगे क्योंकि डू और डाई रेड है और यहाँ पर देखना है, यहाँ पर अंदर तक बुलाना होगा विशाल पटियाल को। और देखिए सपोर्ट नहीं आया, वहां पर टच किए हैं विशाल, एंकल होल्ड करने की कोशिश की जा रही थी। That was such a confident raid from Vishal Patyal against Manish and the right corner. Go for the referral if you have, but Aravalli Arrows unlucky. They don't have the referral there. They have lost it. And endured it raid, and Vishal gets a point and Sonic has marked. And if you look at our guest Arjun Shekhar Dubey, he is at the edge of the seat to witness these last few minutes of the match. Now, hold your nerves, Sindh Sonics. Just try to hold on for this 30 seconds. You would get that one more all out in your wing, and you will get your first victory of this monsoon edition. Now, stay back. Don't do errors here. बिल्कुल, यहाँ पर साहिल झंडू को पॉइंट मिलेगा अरावली एरोज के लिए। बोनस प्लस 1 पॉइंट कह रहे हैं रेफरी। और देखिए, now this is what we say, have that little patience, trying to understand the dynamics of the game you are in, the time of the game you are in, when to attack or when to stay quiet. You have left the bonus line available for the raider. You went back deliberately, you gave away that bonus. Then why did you not hold yourself for those few seconds? You got a revival for Aravalli Arrows. Now it's again upon Balraj to get those touch points. He is on 13 raid points today. Very, very impressive. Sanskar Mishra was slow today, just 1 raid point for him, but Balraj is marching. बिल्कुल, बलराज यहाँ पर आसानी से छका करके चले गए हैं बलराज। Sindh Sonic, jersey number 20 out. I'm sure he's thoroughly impressed with Balraj. When he is just moving his eyeball wherever Balraj moves. So it's a sight to watch. Sahil Jandu, last player. Now, do not repeat the mistake you have done. Yes, you have left the bonus available for the raider. Now, hold your nerve. Only if you get the proper timing and angle, go for it. And this is what it is. Second all-out point for Sindh Sonics. And I'm sure this first victory, in next few minutes, Sindh Sonics will celebrate it hard. Good one coming from the bottom of the table. बिल्कुल, और यहाँ पर देखिए कि अब 8 पॉइंट का डिफरेंस बन चुका है सिंध सोनिक्स का, और वो चाहेंगे पूरे 6 के 6 पॉइंट्स ले। वहीं अरावली एरोज कम से कम आखिरी 1 जो मिनट बचा है वो चाहेंगे इस डिफरेंस को 7 से कम किया जाए ताकि 1 पॉइंट अरावली एरोज को भी मिले। प्रिंस यहाँ पर पूरा समय अपना लेते हुए। Exactly. Prince, look at how maturely he's playing. He killed at 28 seconds crossing the block line. And why this half-hearted challenge? You went close to the raider. Dash him off. You have gone there. Now, the score difference, as we say, is 7 points. That's Vishal Patyal who went. That was not required for the raider to do so. Now, nothing to look. Prince Kumar crossed the box line. Yes, makes the raid illegal. Hold on. It would be one more raid for the Aravalli Arrows. And this will be the first victory for Sindh Sonics. How important is this, Navneet? बिल्कुल, और ये सारे बातों को बदल सकता है, मोमेंटम में चेंज ला सकता है सिंध सोनिक्स के लिए। और याद रखना है कि उन्हें 8 के अंदर आना है, उन्हें 8 के अंदर आना है अगले राउंड में जाने के लिए। उन्हें फर्स्ट नहीं करना है, तो इसीलिए प्रेशर फिलहाल सिंध सोनिक्स को निश्चित रूप से नहीं लेनी चाहिए।
अभी काफ़ी इस टूर्नामेंट में खेल बचा हुआ है ताकि वो अगले राउंड में पहुंच पाए। Now they will march on to the 9th position from the 10th position from the victory of this match. If you could hear the cheers of the spectators, sure, Balraj, he's just not got a super 10 for himself, but then he got the team there awaited, first victory for the team. This is the last raid for Aravalli Arrows, Vishal Chaudhary, and look at the confidence in the defense too. Bonus Congratulations to Sindh Sonics. What a show you have executed today. Sonics. Man, the Raiders have done well. Defense has supported. The weakness got back to your strength. So getting into the winning ways, that's a good one for the team Sindh Sonics. Now you can't say, sitting at the bottom of the table, you just can't say you are not good enough as everybody else is. Now full-time scores of 47-40 in favor of Sindh Sonics. Aravalli Arrows do get a point here because they have lost the match margin of 7 points. So they also get a point here, but then Aravalli Sindh Sonics get a 6. So it's the first match victory for them. Congratulations, well played. बिल्कुल, आज तारीफ करनी होगी सिंध सोनिक्स की जो पॉइंट्स टेबल पर अपना अंक दर्ज करवा पाए, और पहला अंक, पहली जीत बहुत ही महत्वपूर्ण होती है राधिका। और इसी बीच हम देख रहे हैं हाइलाइट्स, और इस हाइलाइट्स में एक इंसान आपको लगातार दिखेगा, एक खिलाड़ी, वो है बलराज। बलराज ने आज 14 पॉइंट्स लिए हैं, उन्हें सुपर रेड करने का भी अवसर मिला, बोनस पॉइंट भी वो लेकर के आए हैं, और आज पूरे तरीके से बलराज इस गेम में छाए रहे और अपनी टीम को पहला जीत दिला पाए हैं बलराज। And also, in the defense, we have seen Harinder doing quite good with 4 tackle points. The Vishal Patyal Singh also got 2 tackle points. And the one who impressed also was, Prince Kumar Roy. He came in as a substitute, got 2 raid points or 2 tackle points. But nothing to take away from Balraj today. He stepped in at the right time. He got a 14 raid points. He's been tackled only twice. So first victory for Sindh Sonics gets a 6 total points on board for the team. The Aravalli Arrows gets away with 1 point because they have lost with 7 points here. 47-40 is the full-time score of match number 21. Sindh Sonics have won their first match of the Yuva Kabaddi Series Monsoon and marches from 10th position to the 9th position on the leaderboard. 24-32 in favor of the raiding department went in favor of Aravalli Arrows. Of the 24 points, we have seen Balraj getting 14 for them, and which was the deficit we've been talking about Sindh Sonics, but they have done beautiful today, and they have got those 2 all-outs also on the Aravalli Arrows, 5 extra points. So this was a complete, big, good show by Sindh Sonics, and I'm sure this win will get that a positive momentum for Sindh Sonics. What a beautiful match we have witnessed. That is Sindh Sonics winning against Aravalli Arrows 47-40. The next match would be Hampi Heroes taking on Periyar Panthers at 11:30 a.m. And in the afternoon and evening sessions, we have at 2 p.m. Kaziranga Rhinos, Maratha Marvels taking on. And also at 4 p.m. Panchala Pride will go against Vijayanagara Wheels. Last match for today would be Tadoba Tigers versus Mortal Magnus. So stay tuned with us on Fan Code. We will be right back with a lot more action at 11:30 a.m. So do not miss the action here at Yuva Kabaddi Series Monsoon Edition. Now we will have the post-match presentation for the match happen. So stay tuned, and we are signing off for now.
जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं. Hello and welcome to the post-match presentation for the match number 21 of Yuva Kabaddi Series 2022 Monsoon Edition. In the presentation today, we have our guest, Mr. Chandrasekhar Dubey, former Member of Parliament and Minister of Government of Jharkhand. Sir, Yuva Kabaddi Series welcomes you. We would firstly like to thank our partners, Dream 11, broadcast partner, Fan Code, Physio partner, UEM, Voice of Kabaddi, Radio City 91.9 FM, Healthcare partner, Genetic Super Speciality Hospital. सिंध सोनिक के सामने थे अरावली एरोज और सोनिक्स ने बता दिया है कि क्यों वे इतने शानदार टीम है. जीत के लिए एक लंबा इंतजार, लेकिन जीत का स्वाद चखने में जरूर कामयाब हो चुकी है. और अब चलते हैं सीधे अवार्ड्स की ओर. इस मैच के बेस्ट रेडर हैं सिंध सोनिक के बलराज सिंह, 14 रेड पॉइंट्स. एक नजर डालते हैं बलराज के परफॉर्मेंस पे. अगला अवार्ड है बेस्ट डिफेंडर का सिंध सोनिक के हरिंदर कुमार पासवान, 5 टैकल पॉइंट्स. एक नजर डालते हैं हरिंदर कुमार पासवान के शानदार फॉर्म का. अगला अवार्ड है कबड्डी का कमाल अवार्ड सिंध सोनिक के प्रिंस कुमार रॉय. इन्होंने 2 सुपर टैकल किए हैं और कबड्डी का कमाल अवार्ड उसे मिलता है जो कि पूरे मैच में शानदार फॉर्म दिखाते हैं. एक नजर डालते हैं प्रिंस कुमार रॉय के परफॉर्मेंस पे. That's all from the presentation ceremony. Thank you so much for joining us.